अपोपस्पृश्यात् ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः पोपस्पृश्यात् शुभं करोति कल्याणम् ओम अच्युताय नमः ओम अनंताय नमः ओम श्री गोविंदाय नमः शुभं करोति कल्याणम् आयु आरोग्य संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपमहादेवी नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओमागमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे गन्तारवं तत्र देवताह्वानलाञ्छनं कण्ठस्थिताय गरुडाय नमः हस्ते पुष्पं गृहीत्वा अथ संकल्प श्रीगुरुभ्यो नमः ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणनायम्य ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों तरेव लग्नं सुरिनं तरेव ताराबलं चंद्रबलं तरेव विद्याबलं दयाबलं तरेव लक्ष्मीपते गौरीपते त्यंघ्रियं स्मरामि शुभे शोभने मुहूर्ते परार्धे श्वेतवराहकल्पे सप्तमे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोकान्तर्गत उत्तरअमेरिका खंडे क्यानडादेशे एजाक्स नगरे संकटमोचन श्री हनुमान मंदिरे शुभे दिन शोभने मुहूर्ते येषां यजमानानां टेक योर नेम्स एवरीवन लोका समस्ताः क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयु आरोग्यमैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तमंगलावाप्त्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं चिन्तितमनोरथवाप्त्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थं श्री रामदूत वीर हनुमत प्रीत्यर्थं धर्मार्थ कामोक्षं चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अद्य अहम महागणपति पूजनम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजनम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र पूजनम वीर हनुमत पूजनम राधा कृष्ण चंद्र पूजनम सदाशिवलिंगाभिषेकाराधनं च करिष्ये इति संकल्प्य पूपस्पृश्यात् श्री गणेश ध्यानो। Pray to Ganesh ji, seeking his blessings. Om Ganana Tva Ganapatigam Havamahe Kavin Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrinvannoti Bhisida Sadhanam Om Shri Man Mahaganadhipataye Namaha Dhyayami Avahayami Pushpasanam Samarpayami पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यम् आचमनीयं शरीरे स्नानं च समर्पयामि स्नानानन्तरमिदमाचमनीयं समर्पयामि अर्चना ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम फालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम हेरंभाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपनैवेद्यम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। धूप दीप नैवेद्यों ओम नाभ्यासिरंतरिक्षं शीर्ष्णोध्यौ संवृतथा पद्भ्यां भूमिश्रोत्रात् तथा लोकागम कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि एलालवंगकर्पूरताम्बूलानि च समर्पयामि। पूगीफलं महदिव्यं नागबलिदलऋतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं निवेदयामि। श्री गणेशाय नमो नमः। We conclude puja to Ganesh Ji with final prarthana. Let us pray together, everyone. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvighnam Kuru Me Deva सर्वकार्येषु सर्वदा ओम करन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। मूषिकवाहन मोदकहस्ते चामरकर्णविलम्बित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्रम्। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न तेतरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं परं हरे भवक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनो विभाजनं मुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्भचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पञ्चरत्नमाधरेण योऽहं प्रचलते प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगितां दोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां
समाहितायुरेष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजनम्। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। पुष्पं गृहीत्वा ओम विद्युदाम समप्रभा मृगपतिस्कन्धस्थिताभीषणां कन्याभिक्खरवालकेतविलसद्दस्थाभिरासेवितां हस्ते चक्रगदे शिखेत विशिखां शापं घूर्णं तर्जनीं बिभ्राणामललात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। ध्यायामि आवाहयामि। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। महालक्ष्म्यै नमः। ध्यायामि आवाहयामि। महासरस्वत्यै नमः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा नागाद्विश्वाची भद्रसुमनस्यमाना महासरस्वत्यै नमः। ध्यायामि आवाहयामि। ॐ जातवेदसे स्वनवामसो ममराति यतो निरहाति वेदः सनः परशरति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वी भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावा दुरितातिपरिषि अग्नियत्र वृन्मनसा गणानो ओस्माकं बोध्यभिता तनूनां पृतनाचितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुवेम परमासधस्तात् सनः परशरति दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवति दुरितात्यग्निः प्रत्नोषि गमीद्योद्वरेषु सनच्च होता नव्यस्य सत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयजोनिषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवी लोकैहमादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। अर्चना। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ माहेश्वर्यै नमः। ॐ शिवप्रियायै नमः। ॐ मन्दारवासिन्यै नमः। ॐ अर्कायै नमः। ॐ गिरिसुतायै नमः। ॐ धात्र्यै नमः। ॐ शिवप्रियायै नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ प्रकृत्यै नमः। ॐ विकृत्यै नमः। ॐ अष्टलक्ष्म्यै नमः। ॐ गृहलक्ष्म्यै नमः। ॐ भोगलक्ष्म्यै नमः। ॐ वीरलक्ष्म्यै नमः। ॐ कुबेरलक्ष्म्यै नमः। ॐ सन्तानलक्ष्म्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ वाग्देव्यै नमः। ॐ वीणाधारिण्यै नमः। ॐ महासरस्वत्यै नमः। ॐ चतुराननवल्लभायै नमः। ॐ ज्ञानप्रदायिन्यै नमः। ॐ श्रीप्रदायिन्यै नमः। ॐ पद्मनिलयायै नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ
धूपम् आघ्रापयामि। ॐ आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि दुर्गादेव्यै नमः। ॐ आर्द्रां यक्कर्णीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं चातवेदो महावः। महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। महासरस्वत्यै नमः। धूपमाघ्रापयामि दीपं च दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं प्रसाद। ॐ अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी माँ तेरा पार न पाया, तेरा पार न पाया मैया, तेरा पार न पाया। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी माँ तेरा पार न पाया, तेरा पार न पाया। सर्वमहानैवेद्यं ताम्बूलं च समर्पयामि। श्री दुर्गा देवी महालक्ष्म्यै महासरस्वत्यै नमो नमः। विचार कुंजिका स्तोत्रम सीखिए ब्लेसिंग्स ऑफ माता जी। ओम अथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच श्रीदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी चापशुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरेव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनमुच्चाटनादिकम्। पातमात्रेण संसिद्ध्येत कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हूं क्लीं छुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटवहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनि। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चन्द्रघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धां धीं ध्रूं दुर्जते पत्नीं वां वीं वुं वागलीश्वरी
क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शिं शुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 वनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः हम कं चं तं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हं क्षं द्विजाग्रं त्रोते दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पिं पुं पार्वती पूर्ण खां खीं खुं केचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती दिव्य मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे स्तोत्रं मन्त्रजागार्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोप्यतं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रयामले गौरी तन्ते शिवपार्वती संवादे कुञ्जिका स्तोत्रं सम्पूर्णम् ओम शांति शांति शांति। जयकारा शेरवालिदा बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा देवी नमो नमः, महालक्ष्मी नमः, महासरस्वत्यै नमो नमः। श्री रामचंद्र पूजन प्रेत भगवान श्री राम, हनुमान जी, राधा कृष्ण भगवान। ओम लोकाभिरामं मृदरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। ध्यायामि आवाहयामि। श्री हनुमते नमः। ओम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्रीवीर हनुमते नमः। ध्यायामि आवाहयामि। आञ्जनेयाय नमो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्यायामि आवाहयामि। ओम कौशल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्री वेंकटेशाय नमः। सत्यनारायणाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमः। श्री चक्रदेवे नमो नमः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो जायागिश्च पूरुषः
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनान् शने अभि ॐ रामाय नमः ॐ रघुनाथाय नमः ॐ नाथाय नमः ॐ सीतापतये नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ दशरथनन्दनाय नमः ॐ सीतावल्लभाय नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि सीतादेव्यै नमः श्रीलक्ष्मणाय नमः श्री हनुमते नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि च समर्पयामि ॐ हं हनुमते नमः ॐ रामदूताय नमः ॐ रामभक्ताय नमः ॐ आञ्जनेयाय नमः ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ॐ लङ्काविध्वंसिने नमः ॐ वीरवीराय नमः ॐ पञ्चमुखी हनुमते नमः श्रीराम परिवाराय नमः हनुमरस्त्राय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ कृष्णाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ कमलानाथाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ वैकुण्ठाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ राधादेव्यै नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि च समर्पयामि ॐ वेङ्कटेशाय नमः ॐ बालकृष्णाय नमः ॐ सत्यनारायणाय नमः ॐ श्रीचक्रदेवे नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपमहानैवेद्यम् ॐ श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचंद्राय नमः श्री राधा कृष्णभ्या नमः अर्चना धूपदीप महानैवेद्यम् ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुतरस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः श्री हनुमते नमो नमः धूपं समर्पयामि दीपं दर्शयामि ॐ श्री वीर हनुमते नमः दिव्यमंगलदीपं दर्शयामि रामदूताय नमो नमः धूपमाघ्रापयामि दीपं च दर्शयामि ॐ राधाकृष्णभ्यां नमः धूपमाघ्रापयामि दीपं च दर्शयामि सर्वरक्षान् धारयामि समस्तोपचारान् च समर्पयामि वेङ्कटेशाय नमः बालकृष्णाय नमः सत्यनारायणाय नमो नमः सकलाराधनैः सुवर्चितं धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं कृष्णोऽध्यौ समवर्तथा पद्भ्यां पुरुषश्रोत्रात् तथा लोकागमकल्पयन् ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्मगणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॐ सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत महालक्ष्म्यै नमो नमः श्री वीर हनुमते नमः राधा कृष्णभ्या नमः नैवेद्यं समर्पयामि श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः, हनुमते नमः, राधा कृष्णभ्या नमः। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। हनुमान चालीसा गाएंगे। All of us we sing together. We sing the glories of Shri Hanuman ji. रामदूताय नमो नमः, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हारहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल चहाते,
कवि को बिद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर बानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न अज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते काटे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोलो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर तेरा, कीजय नाथ हृदय महादेवा। कीजय नाथ हृदय महादेवा। पवन तन संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम।
तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष हनुमत रक्ष रक्ष श्री सीतारामचंद्र रक्ष रक्ष राधा कृष्णभ्यां नमः। अनंतकोटि प्रक्ष नमस्कारान् समर्पयामि। श्री सांब सदा शिव पूजनम्। ओम नमः शिवाय देवाय सच्चिदानंदमूर्तये नमो वेदांत वेद्याय योगिनां गुरवे नमः। योगिनां गुरवे नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमो नमः। Hari Om. We place our hands on our heads. We touch all the limbs of our body as we commence puja to Bhagavan Shiva. Om Asya Shri Rudradhyaya Prashna Mahamantrasya Aghora Rishihi Dinos Anushtup Chandaha Sankarshan Murti Swarupo Yosavaditya Parma Purushasya Esha Rudro Devata. Recentum the chest. Namah Shivayati Bijam Shivatarayati Shaktihi Mahadevayati Kilakam Shri Samba Sadashiv Prasad Siddhyarte Jape Viniyogah. ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्टाभ्यां नमः। ओम दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ओम चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ओम अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। ओम दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। ओम चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट्। ओम निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम्। ओम ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय भविष्यत्। ओम सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमा विस्फुरत् ज्योतिष्पातिकलौ नुवातामृतेः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपरं विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवं ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुचाभासमान भुजङ्गैः कण्ठे कालाकपर्दाकलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटितविभवा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम शंच मे मयश्च मे प्रियंच मे नुखामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे तिथिश्च मे विश्वञ्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे अमृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सुषाच मे सुरिनञ्च मे। ओम शांति शांति शांति। अभिषेक एवरीवन। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमण्यवतोते शवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उत ते नमः। या तैषु शिवतमा शिवं बभूवते ननुः शिवा शरव्या या तवतया नो रुद्रमृडया। लाइन में आ जाइए प्लीज एवरीवन। प्लीज कम इन अ लाइन बनाइए सबको। एवरीवन प्लीज कम इन अ लाइन। लाइन नहीं आना तो गड़बड़ हो जाएगा। लाइन में आ जाओ प्लीज। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशेः यामीशं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिगं शिवपुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा न सर्वमिज्जगत् यक्ष्मगं सोमना असत्
अध्यवोचरदि भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगिश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणौत बभ्रुस्वमङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रुता सहस्रशो वैशागम्हेड ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपादृशनदृशनुरहार्यः उतैनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराट्नियोर्जां यास्यते हस्तैशवपराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगं सहस्राक्षसते शुधे निशील्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव वे जन्दनुःकपर्जन विशल्यो वाणवागं मुता अनेसनस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीरुष्टमहस्ते बभूवते ननुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय दृष्णवे उभाभ्याम् उत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो येषु धिस्तवारे अस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः। ओं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय पुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओं नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिङ्गं निर्मल भासित शोभितलिङ्गं जन्म जदुःख विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय 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 देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदः करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय 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 सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कनक महामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गं दक्षयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। कुङ्कुमचन्दन लेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चित पाप विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। देवगणार्चित सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। अष्टदलोर्परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्रभवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। सुरगुरुसुरवनपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परम परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्रीमन्महादेव।
ओम राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंगा पांडुरंगा राम कृष्ण हरि पांडुरंग पांडुरंग राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग पांडुरंग राम कृष्ण हरि पांडुरंग पांडुरंग राम कृष्ण हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधा माधव राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम सीताराम 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 सीता वल्लभ सीताराम सीता वल्लभ सीताराम राधा मुकुंद राधे श्याम राधा मुकुंद राधे श्याम राधा गोविंद राधे श्याम राधा गोविंद राधे श्याम राधा 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 राधे गोविंदा राधे गोविंदा वृंदावन गोविंदा वृंदावन गोविंदा कृष्णा मुकुंदा हे श्याम कुंदा हे नंद नंदना हे नंद नंदना ओ नंद नंदना ओ नंद नंदना हे नंद नंदना हे नंद नंदना ओ नंद नंदना ओ नंद नंदना राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि ओ पांडुरंग हरि जय जय पांडुरंग हरि 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 श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः राधा कृष्ण ध्यान नमो नमः सकलाराधनैः स्वरचितम प्रसाद प्रसाद चढ़ाइए तो सब प्रसाद ऑफ योर प्रसाद एट दिस टाइम ओम थाली अंदर है प्लास्टिक बैग के साथ भगवान के पास मत जाइए थाली अंदर है अपने प्रसाद अच्छी तरह से थाली में रखकर फिर प्रसाद चढ़ाइए राम 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 रमेति रमेति
रामे रामे मनोरमे शस्त्रनाम तत्तुल्यं रामनाम परायणम्। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम प्रभु सीताराम, सीताराम प्रभु सीताराम। भजमन प्यारे सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम भजन से मन सुख पावे, तन का पाप सकल गुण गावे। राम भजन से मन सुख पावे, तन का पाप सकल गुण गावे। तन का पाप सकल गुण गावे। पंचावे सब बिगड़े काम। जय सिया राम प्रभु जय सिया राम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऊंच नीच सब एक समान, सबको सन्मत दे भगवान। ऊंच नीच सब एक समान, सबको सन्मत दे भगवान। सबको सन्मत दे भगवान। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। जमुना तीर बल त्यागी, जमुना तीर बल त्यागी। जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय
कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद की लाला जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद की लाला जगपालक तू रास रचैया गोवर्धन गिरिधारी कितने नाम तेरे नटवर तू सावल कृष्ण मुरारी जगपालक तू रास रचैया गोवर्धन गिरिधारी कितने नाम तेरे नटवर तू सावल कृष्ण मुरारी मुकुट मन हर लेवत बलिहारी हर ब्रिज बाला मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद की लाला जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद की लाला सागर में रमता तू ही धरती पाता जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार तू ही सागर में रमता तू ही धरती पाता जल में नभ में और जगत में तेरी जय जयकार मेरे मंदिर में स्वामी तुझसे ही उजियाला मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद की लाला जय गोविंदा गोपाला मनमोहन श्याम कन्हैया मुरलीधर गोपाला घनश्याम नंद की
Shri Ganeshaya Namaha. Shri Mahasaraswatyai Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. Ata Prarthana. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tatulyam Ramanam Varanane Atulit Baldhamam Hem Shailavadeham Danujavan Krishanum Yani Nama Graganyam Sakala Guna Nidhanam Vanaranam Adhisham Raghupati Priya Bhaktam Vatjatam Namami Shri Sita Lakshmana Bharata Shatrugna Hanumat Sameta Ramachandraya Namaha Shri Hanumate Namaha. Ram Ram. Sitaram. So for the past month, we've been looking at Sant Asanto Ke Lakshana, the characteristics of the saintly. So for about 1 month, we looked at the characteristics of the saintly. Today, we shall begin the discussion, Asanto Ke Lakshana, on saintly qualities. You see, my friends, Prabhu Sri Ram, in the Uttarakhand, having been asked by Bharatji to describe the qualities of the saintly, he gave a detailed description about saintly qualities. And as a spiritual aspirant, these are some of the qualities we should emulate. We must have some of these qualities, saintly qualities. So having spoken about saintly qualities, he spoke next about unsaintly qualities. Things that we should not do, some of the qualities we should not have. You see, the beauty of this dharma, the evidence or the knowledge is presented to you. Nothing is forced down your throat. Likewise, in the Upanishads and Bhagavad Gita, the saints and sages presented the teachings to their shishya and then told them to make a decision. But there will be consequences if you go against the universal order. Likewise, in Bhagavad Gita, that's why Arjuna was a little confused in the 2nd chapter. Bhagavan told him to follow the path of Gyan. Gyan is good for you. Then later on, Bhagavan said, oh Arjuna, karma is good as well. So Arjuna was a little bit confused. Prabhu, you tell me this is good and the other is good. Tell me that which is good for me. Again, the material is presented to us and we have to make a decision. We have buddhi, my friends. We have intelligence. So we have to choose which path we want to follow. The path of the saints and sages or the path of the dushta, the path of the rakshas. Again, nothing is forced down your throat. You don't have to accept anything. Listen first and then make a decision. It is not about faith. You have to put your trust in this and put your trust in that, or else you're cast away. No more opportunity for you. The material is presented to you. Look at it and make a decision. That's why we call humans. We have buddhi, we have intelligence. So it's very straightforward. What do we hear sometimes? If you don't accept this person, if you don't accept this and accept, no. Let the material be presented first, then the individual will make a good decision. Look at the teachings and you weigh the pros and the cons. This is something I want to follow. So we talked about saintly qualities. Now Sri Ram presents the qualities asantoka lakshan, the qualities of the unsaintly. Let us see what Bhagavan has to say. Again, and this katha this morning will commence from Uttarakhand after Doha number 38, Chaupai number 1. And it's interesting to note, Sri Ram spoke, when we look at both discussions, the qualities of the saintly is shorter than the qualities of the unsaintly. So he emphasized much more on unsaintly qualities, things that we should not do, qualities we ought not to have. Sri Ram says,
Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama. 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 सुनहु असंतन के सुभाओ, सुनहु असंतन के सुभाओ। भूलहु संगति करियन पाओ, भूलहु संगति करियन पाओ। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama. तिन्हकर संग सदा दुखदाई, तिन्हकर संग सदा दुखदाई। जिमि पालहि पालहि हर हाई। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama. श्री राम जय राम, जय जय रामा। Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama. So before we look at the meaning of this chaupai, when we speak about evil in Vedic Dharma, it is always internal. On the other hand, we hear if someone doesn't worship like you, someone doesn't dress like you, someone doesn't follow your culture, that's the devil. That's a misconception. Within each and every one of us, we have these positive qualities and negative qualities. That's the devil we have to fight. You see, this whole spiritual process about to purify the mind, to purify one's thinking and understanding. Okay, let us say, we hear some childish statements sometimes. You just accept this person, and then it doesn't matter who you are, you accept this, and that's it. A ticket to heaven, or you'll be saved. If it was so easy, many of us would have gone to heaven. Heaven would have been crowded already. There is no more space. But that's not the case, Pyare. This whole spiritual process is for us to change our thinking and our understanding. Because out of all of Bhagavan's creation, we have the ability to choose to do or not to do. So what Bhagavan says, Sunahu asantanakay subhao. Hear now, O Bharatji, and while he's speaking to Bharatji and his brothers, he's speaking to all of us. Listen now to the unsaintly qualities. Bhulehu sangati karya nakau. Even by mistake, do not be in association with people who have these qualities. If by mistake, you should not practice them. Bhulehu. Dinhakara sanga sada dukadai. The association or one who has these qualities will always experience pain and suffering in this world. The person may gain short term. In short term, the person may gain as these negative qualities will reveal, and we see it sometimes. Panditji, or I do puja every day, I follow dharma, I do not go against the universal order. But these other people who are doing so many unethical actions, it appears that these people are prospering so much. Remember, they're burning out their punya. Only a matter of time for them to face the consequences. For us, on the other hand, we're burning out our negative
karma so that we can enjoy bliss at the end of it. So those people who are doing unethical actions, who are not following dharma, who take advantage of the less fortunate and do all these bad things, only a matter of time for the karma to catch up with them. So not by mistake, Bharat, my dear brothers, do not practice this quality. And the example he used is like a cow, a noble cow that gets into the company of wild cows. Or a person with good qualities get in the company of people with bad qualities. Eventually, the association will change that person. So when you see someone who has these qualities that we will talk about, and you recognize these unsaintly qualities, do not associate with them. Ram Ram, and you go the opposite side of the road. Respect and love for everyone. We see Bhagavan in everyone. We don't judge them as the devil. Again, the devil is right here between you and I. So these are some of the qualities we should not have. Shri Ram continues in the Chaupai. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Kalan hridaya ati tap viseshi jarahi sada par sampati dekhi. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. 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 Jaha kaha ninda sunahi parai. Jaha kaha ninda sunahi parai. Harashahi manahu parinidhi pahi. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. 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 Khalan hriday ati tap viseshi. The heart of the wicked is like that of a consuming fire. This heart of the wicked person burns when the individual recognizes the progress of others. Jarahi sada parasampati dekhi, which is ever bliss at the sight of others' prosperity. So people who are not dharmic, who are very selfish, who feel the world revolves around them, and only they must experience happiness in life, everyone else should suffer. Only they should receive wealth, they should be happy, and everyone else should suffer. Such people, when they see other people progress in life, their heart consumed like that of a blazing fire. They can't control this dwala. Now when we look at these qualities, if we recognize that we have some of them, if we think like this, you and me and all of us, if we think like this, we have to change our thinking. Because these are the words of Prabhu Sri Ram. He's our master. Hamare Malik hai. He's saying not to have these qualities. If by chance we see other people progress,
And it's a human thing. Sometimes, we see other people progress in life sometimes and become a little jealous. We've all done that, right? We've all done that time and again. Again, it's not a good quality, and we recognize it and we try to change it. When Sri Ram spoke all about saintly qualities, when the saintly person is one who is happy for those who experience progress in life and prosperity. When people go through pain and suffering, he pains with them. He experiences their pain and suffering. Jaha kahu ninda sunahi parai harshahi manahu pari nidhipai. Whenever they hear people criticize other, people slander other people, they feel delighted as though they had stumbled upon a huge treasure lying up on the road. You know this word ninda? Criticism or fault finding. Again, we all become victims of this. We see people behave in a certain way and do certain things not to our liking, and we're ready to criticize them. We're ready to say, this is not right, this is not wrong. All kinds of comments we make. A saintly person would not do this. So what Bhagavan is saying, that when you see people progress in life, do not be jealous of them. And also, when people criticize other people, do not join in the conversation. It sounds so nice sometimes. The conversation is going good, and people are saying this and that about such and such person, and we feel like we have to join in to utter a few sentences or a few words. That is not a saintly quality, Bhagavan is saying. And if we notice we are doing something like that, we should avoid it. As a matter of fact, in some Hindu homes, there is a sign written, "Is ghar mein ninda karna mana hai," meaning slandering another person in this home, criticizing other people in this home is forbidden. So Sri Ram is saying, be happy for people when you see them progress in life. Do not criticize other people. And the strange thing is that when we judge other people, we raise the bar. Isn't that true? We find faults in other people, we raise the bar. And when we compare ourselves to others, we lower the bar. Prabhu is saying, avoid criticizing people, because we all have our gun. We all have many, many bad qualities. So let us try to fix our bad qualities instead of pointing out them in other people. By the grace of Bhagavan, if we were to do that, then we'll only elevate ourselves. Again, as I said at the beginning, the whole process is to purify the mind. It's not a ticket to go to heaven. Everybody wants to go to heaven. And it bothers me when our Hindu brothers and sisters say they want to go to heaven. This is not a heaven. This goal for this dharma is not heaven, pyare. You've been there many times and you came back. Udhar kya karenge? If you can't live and get control over a mind here, do you think you'll get it in heaven? It's not possible. So here in this human form, let us purify the mind through karma yoga, through selfless action, through puja, through meditation, through worship. Bhagavan continues in the other chaupai. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama. 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 Shri Ram Jai Ram. Kam Krodha Madh Lobha Parayan. Kam Krodha Madh Lobha Parayan. Nirdaya Kapati Kotil Malayam. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama. Shri Ram Jai
Jai Ram, Jai Jai Rama, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama, Shri Ram Jai Ram. Bayaru akaran sab kahu so, Bayaru akaran sab kahu so, Jo karhit anhit tasu so, Jo karhit anhit tahu so. Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Rama, 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 Shri Ram Jai Ram. Kam, Krodha, Mada, Lobha, Parayan. Again, we are all guilty of these qualities. Before we look at the meaning of this chaupai, you know, Bhaiya, Pyare Bhakta Jano, we sing a beautiful arati, Jai Jagadish Hare. When we look at the meaning of this arati, the meaning of this arati, and we sing it all the time, is quite changed. We demand everything from Bhagavan. Mujhe ye do. And at the end, Tana Mana Dhana Sabha Tera. All of these things we said to Bhagavan. And these words come from the lips only. You know, we have come from a tradition, all of us. All Hindus have their origin in India. It doesn't matter which part they are from. Every brown person like you and I, we have Rishoki Santan. We have the blood of the rishis running on us, in our veins. My foreparents went 200-something years ago in the West Indies. But this dharma of ours, wherever we are, we must be proud of it. We have come from a tradition where in the Ramcharitamanas, your word, if you say something, you put your life against your word. Raghukullarit sada chal aaye. और आजकल हम लोग क्या करते हैं? विपरीत करते हैं. We do totally opposite. Na baap na bhaya sabse bada rupaya. For 2 rupees we will lie. $2 we will lie. And still हम लोग भगवान क्यों help क्यों नहीं करते हैं? अरे भैया, if the mind is not pure, what are we demanding from Bhagavan? All of these things, we believe we are mass, all of these things, and yet when we sit to pray, we look at the other person. When we're ready to, as a matter of fact, we find between brothers and sisters, family and friends, we fight so much and compare ourselves. As if by getting all of these things, we'll be happy. Nothing is wrong with artha and kama. Work diligently, honestly, and get it, pyare. But they become a burden upon you later on. That is, if you're spiritual. If your goal is to discover who you are, is to become one with Bhagavan, then these things become a burden. But Bhagavan is saying, calm. The word parayan means to be obsessed or to be devoted to something. When you're obsessed with something, parayan, calm. This path of dharma, sometimes it all becomes so lustful. That's why the saints and sages always emphasize, purify the mind through sadhana. Purify the mind through Bhagavan's name. It is the most powerful thing we have at our disposal. But instead of reading Bhagavan's name, हम लोग क्या करते हैं? Social media पे hours and hours we'll view pictures and view views and all kinds of silly things and we forget Ram Naam Japna. मैं सत्य बोलता हूँ. Shake your head please. मैं सत्य बोलता हूँ. हम सब. So the greatest power we have at our disposal to purify the name with Bhagavan, purify our hearts with Bhagavan's name, but we don't do it. And yet we complain. Yet we complain. We must not be obsessed with lust, anger.
Sometimes we sit for puja. We see it sometimes. We come to the mandir. We have a sign, no short pants on the altar. When you come in any place of worship, respect should be given there. There's a little sign there sometimes. You tell, don't go up with short clothes up there. There's a discipline up there. We want people to go up, people to go and touch Bhagavan. Some places you're not allowed to go. We want people to go and be touched by Bhagavan. Because for us, that's Bhagavan sitting there with Pratishtha. But yet there's a discipline when you go up there. Some people wear short clothes, all kinds of things, and you go up there and you tell them, they're more upset than you. Mandir kyun aate hai? With that kind of attitude, why do you come to Bhagavan's home? These are little examples I'm giving you that we experience every day. People get angry unnecessarily. So we must be careful how we conduct ourselves. Be free from anger, be free from lust, mud, arrogance. Yet again, we feel this world revolves around us. Sabse cool aadmi main hu. I'm the greatest, everyone should worship me. And when we go places and we don't get our way, we complain and we get angry. These words are universal truth, pyare. They are applicable in Satyayug, Treta, Dwapar, and more importantly in Kali Yuga. The other one, lobha, greed. Aap sab jante, everybody knows, I don't have to say it, but sometimes we should have to repeat it. Greed for what? Ye jivan do din ka. What did you bring here? What did you come with in this world? You came with your ghatri of karma only. And that's punya and papa. When we understand the true meaning of living, we want to burn out our papa. That's why Kunti Bhua said to Bhagavan Krishna, Mujhe dukh do Krishna. Give me pain and suffering so that I can burn out my karma and I can always remember you. Nirdaya. We are ruthless when it comes to dealing with people sometimes. What do we find? Sometimes our own brothers and sisters who work for us, we have a little position as a supervisor or a boss or owner of a business, and we take advantage of the people who come and work. We make them work long hours, try to pay them the least, as if we will take anything with us. Kapati, dishonesty. We say one thing in front of somebody's face, and we have another thing to say behind their back. Kutil, we are crooked with our dealings with the world and everyone else. Malayan, vulgar with our interaction in this world. Again, the emphasis is to purify the mind here, my friends. It's not a ticket to go anywhere. It's not a ticket to enjoy yourself. You have to live here and live well here. Purify the mind through sadhana. Bayaru akarana sab kahuso. And they unsaintly cherish causeless animosity against everyone. And also, jo karahita anahita tahuso. And those people who are good to us, people who are kind to us, offer us a helping hand. We give them what? We return evil towards those individuals. How do we expect to find peace in this world? How do we expect to find true happiness if we have some of these qualities? So again, what Bhagavan is saying, this is what we ought not to have. The other duha says, Jhoot hi le na jhoot hi dena. Jhoot hi le na jhoot hi dena. Jhoot hi bhojan jhoot chabena. Jhoot chabena. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. 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 Jhoot hi lena, jhoot hi dena, jhoot hi bhojan, jhoot chabena.
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. 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 बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाहि महाअहि हृदय कठोरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama. The unsaintly, people who live only for themselves, people who are always swarthi, always selfish. Everything they do in this life is only for a show. Typical example, social media. Every move people make, for their dinner they're putting up pictures. Vacation जाते हैं, picture खींचते हैं, इसीलिए चोरी, that's why people go steal in their homes. They know no one is there. You know, प्यारे, but Bhagwan says will always be truth. People profess to be one thing in front of friends and family, and they're totally different. Otherwise, you know, there's a gentleman used to work with me first when I came to this country. We all have to work our way up. You had to take whatever job was available, and then you continue your studies, right? That's known fact for everyone who came here. The gentleman would leave home with a suit, and he would work in the factory, and he would change and go home back with the suit. Just to show other people that he's working in some office. Jhoota hi lena, jhoota hi dena. Why? Just to create an impression on others. So what Bhagavan is saying, that such people, unsaintly people, will only practice falsehood. They will do things just to create an impression on other people. Bolahi madhura bachana jimi mora, and they will speak sweet and sometimes words in honeyed accent, just to create an impression on other people. And what? Khahi maha ahi hridaya kathora. And just like the moor, just like the peacock has a sweet voice when it makes its noise. It dances in the forest when it's just about rainy time and spreads out its beautiful wings and feather. But the peacock also has a very dark side. The peacock would eat the most poisonous snake. So likewise, people pretend to be nice in front of people, speak really nice words, and behind their back, they have so many evil things to say. You know, when we look at this whole spiritual process, if your goal is not for moksha, these things they'll only go through one ear sometimes and come through the other side. Beach mein kuch nahi hai, the blockade. But if our goal is only to enjoy ourselves and to take whatever we want from this universe and feel that by getting all of these things we'll be happy, then these words will mean nothing to us. For those individuals who want to purify their mind, who want to know the self, who want to discover who they are, then these words, they have great meaning. So as we look at these unique qualities that Sri Ram talked about, let us try not to have them. Try not to be greedy. Try your best. It doesn't matter what other people get. You know, the grass on the other side always looks greener. But when you speak to those people who they may appear to be successful and happy, but when you speak to them, you don't want to be in their position. You say, Prabhu, thank you. I can pay the bills at the end of the month somehow, and I can sleep with your name. I'm comfortable with your blessings, Prabhu. But on the other hand, those people who may appear to be wealthy, you don't understand what's going on in their lives. They have miserable lives. Whatever you are blessed with, count your blessings. It's Bhagwan's kripa. This life is not a competition. Don't compare with other people.
Each person is burning out their karma. They're placed in a situation based on their prarabdha karma. So don't compare with other people. The other dohan, and we'll conclude. Pardroha hi pardar rat, pardrohi pardar rat, pardhan par apbaat, pardhan par apbaat. Te nar pavar paap mein, te nar pavar paap mein, deh dhare manujat, सियावर रामचंद्र की जय शरणम. Paradrohi paradar rath. Bhagavan is saying, John said, they are malicious by nature and they covet not only their wealth, they look at an evil eye at others' wives and others' daughters. And we can see it again. Lustful individual. Paradhana para aparad. They take and the wealth of other people's wealth, they covet it. They slander other people. How do you get all of these wealth? They're ready to criticize you. Te nara power papamai, deha dhare manujan. Bhagavan is saying such vile and sinful people are the devil in human form. We hear sometimes people, how this individual amass all of this wealth? Probably he's doing drugs or he's doing some underhand business. What's your business? Or we to judge other people, what they do, how they conduct themselves. So Sri Ram is saying, the Alsetni are malicious by nature. They covet others' wives and wealth and take delight in slandering others. Such violent, sinful people are like the devil in human form. Wicked individuals. These people can never find peace. So these are some of the unsaintly qualities. As I said at the beginning, we look at them. There's a lot for us to understand, a lot for us to digest and live with this morning. I don't want to overwhelm you too much with too many negative qualities. We talked about quite a few. This is what we ought not to have. Try your best to be simple, just humble. Just offer a kind word of advice. If you don't have anything nice to say, if we don't have anything nice to say, don't say anything. Just remain quiet. Because the moment we get into a conversation sometimes where people are criticizing and slandering other people, if you remain quiet and you don't say anything, you are not taking pap upon yourself. You're remaining neutral. And that's the goal. We don't want to involve in all of these things. All of this criticism, all of this negative thinking. It's hard sometimes. All you can do, try your best. Boliye Ramachandra Bhagavan ki jai. Pavan Sutta Hanuman ki jai. Take Bhagavan's name. Bhagavan's name will purify our hearts. Bhagavan's name will transform all of these negative qualities into positive ones. But we have to put our trust in Bhagavan. Shri Sita Lakshmana Bharat Shatrugna Hanumat Samet Ramachandraya Namo Namaha. Ram Ram Bol, Ram Ram Bol, Bol Meri Rasna, Ram Ram Bol. We have to try to take Bhagavan's name. It's the only thing that will purify our minds. Ram Ram Bol, Ram Ram Bol, Bol Meri Rasna, Ram Ram Bol. Shri Ram Ram Bol, Ram Ram Bol, Bol Meri Rasna, Ram Ram Bol. Ram ka naam bada upkari, isko bhajte sab nar nari. Ram ka naam bada upkari,
इसको बजते सब नर नारी, इसकी महिमा इसके मीठे मीठे बोल, इसके मीठे मीठे बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, श्री राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल। राम का नाम सदा दुख भंजन, इसको जपते नाथ निरंजन, राम का नाम सदा दुख भंजन, इसको जपते नाथ निरंजन, इसकी महिमा बड़ी अनमोल, इसकी महिमा बड़ी अनमोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, श्री राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल। राम का नाम सदा सुखकारी, इसको जपते श्री त्रिपुरारी, राम का नाम सदा सुखकारी, इसको जपते श्री त्रिपुरारी, मुख खोले तो राम नाम बोल, मुख खोले तो राम नाम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, श्री राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। Tomorrow is Vinayak Chaturthi, and we have a beautiful murti came from India last week. Pratishtha will be done. So don't do any arati, don't touch the murti till after Pratishtha tomorrow. Then every evening after Pratishtha tomorrow evening, every evening we will do Ashtotara Shatanam, 108 names for Archana. We do Bhajan Kirtan from 7 p.m. to 8 p.m. And then next Sunday we'll do our Visarjan. So next Sunday, there's some flyers outside, so please take one when you're going. So next Sunday, we'll have a regular satsang from 10 a.m. to 12 noon. Then from 3 to 5 p.m., we'll do puja, special puja to Ganesh ji. Agar mausam acha hai, to bahar karenge. If the weather permits, then we can take, of course, we'll have a tent outside and we'll do puja, we'll sing, we'll dance outside. And then from 5 p.m., we are going for Visarjan. We can carpool because there's limited parking there. And I kindly ask, wait for a second, please. Thank you. You'll do just now. 1 second, Archana. Yeah. So I kindly ask, do many devotees call, Panditji, hamari murti andar hai. We have permit for one murti only, and we will take that murti only. So please do not bring your own murti to do Visarjan there because we'll get in trouble. We have permit for one murti only. Every year this becomes a problem. Devotees would call and ask, Pandit, kya karu? If I break the law, they'll put my picture in the newspaper. You see me in the news tomorrow. Garbar ho jayega, right? So let us please follow the rules. If you have your own murti, see, you can't come and do Visarjan with us. It's against the law. Hum log niyam ko palan karte hai. We don't go against the law, right? So
Come for puja, come for pratishtha tomorrow, come with your bhakti. Why the murti is made out of clay? Come and offer your problems. These negative qualities we talked about today, offer them to Ganeshji. He will transform them for all of us. So that is pratishtha tomorrow, every evening from 7 p.m. puja, and next Sunday is the Visarjan. On the 18th of November, we are having our annual Diwali dinner. And the purpose of this dinner is that we need to have our own place of worship, our own building. We've been here almost 12 years, and the time is right for us to start working towards achieving that goal. Kab hoga, kaise hoga, keval mere Hanuman ji jante hain. How and when it will happen, only Hanuman ji knows. But Bhagwan works through you and I. We are servants of Hanuman ji. So I'm kindly asking you, if you can sell some tickets, please. We have tickets. It's a dinner and a cultural show. And you can't beat this price. The other places, they have $100 for other places just for a dinner. And we're having $35 for adults, $20 for children. It's a 3-hour program, including dinner as well and cultural performances. We are also celebrating November Hindu Heritage Month as well. So see if you can sell some tickets, please. Again, it's going towards our building fund. And hum sab, jaise, you know, Hanuman ji and all the varners, they brought one rock, one tree, one little piece of soil, and they built that bridge to go to Lanka. Vaise hi hum sab will put all our little resources together to build a special building for Hanuman ji. Hum sab karte hai. We all hold instruments in Bhagwan's hand. So take a flyer, see if you can sell some tickets, if you can buy a table, or any way you can support. Again, it's all done in the name of Bhagavan, and we're all doing it. So we look forward for your support. आइए प्रसाद चढ़ाइए, आइए जी, नहीं कोई बात नहीं, आइए प्रसाद चढ़ाइए. रामदूताय नमो नमः, आंजनेयाय नमो नमः, महाबलाय नमो नमः. श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमो नमः. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता जाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. We all sing together. गाइए. श्री राम जय जय राम. 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 राम श्री राम जय जय राम. 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 श्री राम जय जय. जय जय विघ्न हरण हनुमान. 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 राम नाम रसिया वीर हनुमान.
राम नाम रसिया वीर हनुमान, प्रभु मन बसिया श्री हनुमान, प्रभु मन बसिया श्री हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए आरती करेंगे, खड़े हो जाइए। But please do not go upon the altar when you do arati. Stand, take thali and right in front, please. आइए, please come everyone. प्रकृष्ट पापनाशाय प्रकृष्ट फल सिद्धये प्रदक्षिणं करोमीशं प्रसीद परमेश्वर। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। शुक सनकादिशेष अरुसारद, शुक सनकादिशेष अरुषारद। बरनी पवन सुत कीरति ने की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। कलिमल हर निविषय रस पीकी, कलिमल हर विषय रस पीकी। शुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, सुभग सिंगारी मुक्ति जुवती की। दलन रोग भाव मोरी अमी की, धलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति
कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। हाथ जोड़िए सबको. We all clasp our hands nicely by your chest, not like that. जब प्रार्थना करते हैं ऐसा करो. सबको हाथ जोड़िए. ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव. मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे. ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि. ओम शान्ति शांति शांति. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. बोलिए रामचंद्र भगवान की जय. पवन सुत हनुमान की जय. कृष्ण चंद्र भगवान की जय. जगदम्बे मैया की जय. हर हर नमः पार्वती पते. हर हर महादेव.